So hello, good morning students. So as you know, in our last videos we discussed about the function. First of all, the definition of the function, after that advantages of the function. Next is the method definition. So what is the method definition? Methods are defined. First of all, methods are defined within the क्लास के अंदर डिफाइन किए जाएंगे. Here is we define here class name is lockdown1. Okay, so the first line of the method definition is called, what we call it, method header or method prototype. Clear? So next we discuss about the method signature. So what is the method signature? Method name. What is the name of the method here? Fact. Method name along with the method parameter, means within the method header the method name and parameter that belongs to the method signature. Clear? So our next we discuss about the method parameters. So method parameters, what are the method parameters? Parameters are given in the round bracket. ये वाले जो है parameters given in the round brackets after the method name, जो method name के बाद लिखे गए हैं within the round bracket, that is referred to the method parameters. So next is the method means calling a method, means invoking a method. Invoking a method means from where we generate the call towards the method. यहाँ से हम मेथड को कॉल करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वोकिंग ए मेथड. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कॉल टू द मेथड. यहाँ से हमने कॉल किया किसको? मेथड को. OB मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. हेयर वी क्रिएट in this line we create the object of the class. Name of the class is lockdown1. Lockdown1 means class name. Object name is OB equal to new and class name is lockdown1. Clear? Means to create the object of the class, to create the object, syntax is class name, object name equal to new class name. So according to the syntax we create here object, and in our next line we call the function. Here I'm called to the fact function. ob.fact m is a actual parameter, but we call to this parameter actual parameter, and to this one formal parameter. Actual parameter means which contains some value, जो कुछ वैल्यू को होल्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर. जहाँ वैसे भी बोल सकते हो the parameters that appear in the method invocation. The parameters that appear in the method invocation are called actual parameters. जो मेथड के कॉलिंग टाइम करते, जो इन्वोक करते टाइम जो मेथड के अंदर पैरामीटर हमने लिखे हैं, वो पैरामीटर कौन से? एक्चुअल पैरामीटर. The formal parameter, the parameter that appear in the method definition. This one is the method definition full one. Method header भी बोल देते हैं, method definition भी बोल देते हैं, method prototype भी बोल देते हैं. Okay, so in the parameters that appear in the method header or method definition, that is referred to the formal parameter. और ये कौन से हैं? Actual, ये वाले actual parameter और ये वाले formal parameter. So formal actual parameter always pass the value. Actual parameter जो होते हैं वैल्यू को पास करते हैं towards the formal parameter, means इसकी तरफ वैल्यू को पास करते हैं. Now the value of m is 5. When we call to the function fact, value is transferred towards the formal parameter, means 5 यहाँ से transfer होगा towards the formal parameter. Here we declare another variable k, but we value pass from the actual parameter that value received by the formal parameter. जो हमने 5 पास किया वो किसने रिसीव करना था? फॉर्मल पैरामीटर ने. फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कौन है? k. तो k ने 5 को रिसीव कर लिया. नेक्स्ट दिस वन इज द लॉजिक टू
फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, एक किसी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना, लाइक फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 मीन्स 20, 20 इंटू 3 मीन्स 60, 60 इंटू 2 120 इंटू 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 इक्वल टू 120. ओके, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120. क्लियर? सो यहाँ से हमने क्या किया, we simply call the function with a value, means with the actual parameter with the value 5 and value passed towards the formal parameter receive the value from the actual parameter, and this loop execute or calculate the result, means calculate the factorial of a number, and in this statement we print the factorial. Now it's clear, means actual parameters and formal parameters, both terms are clear. Okay, so the next one, next is the returning from method. Next topic is returning from method. Okay, so first of all, two return types are there. One is the void, second is the return. So first of all, void return statement. Void, when we write the void return statement in the method header, it means our method does not return anything towards the caller statement, means हमारा जो फंक्शन होगा, हमारा जो मेथड होगा, कोई भी वैल्यू जहाँ से कॉल जनरेट हुई थी वहाँ उस तरफ कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हमारी कौन सी डेटा टाइप है, अगर हमारी रिटर्न टाइप कौन सी है, वॉइड. क्लियर? सो आवर नेक्स्ट रिटर्न टाइप इज रिटर्न. पब्लिक return now delete this statement and return h. sorry int public int fact k return h, and here int j equal to fact dot op dot fact m, system dot out dot print value of j. ठीक है. In the void function, means in the void data type, we does not return anything from the functions toward the caller statement. यहाँ तक हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते. बट if we use the return type, अगर हमने रिटर्न टाइप यूज कर लिया, then it returns the values towards the caller. क्लियर? तो इसके अंदर हमने क्या किया, पब्लिक int fact. int means जो भी, like what is the data type of h? Data type of h is int, so that's why we use here int. अगर h की डेटा टाइप फ्लोट होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट. अगर h की डेटा टाइप करेक्टर होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्टर लिखेंगे. क्लियर? नाउ आफ्टर कैलकुलेशन मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग it returns the value, means after processing the result, if we pass here 5, we generate the call from this statement, means ob.fact, and this value passed towards the formal parameter. After that, means processing, after processing we returns the calculated result. जो भी हमने result calculate कर चुके हैं, मीन्स हमारा रिजल्ट क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल 120, यानी कि लास्ट वैल्यू ऑफ एच दी, लास्ट की जो वैल्यू होगी एच की वो क्या होगी, 120. सो इन दिस स्टेटमेंट वी रिटर्न 120 टूवर्ड्स दिस स्टेटमेंट. यहाँ से हमारी कॉल जनरेट हुई थी, तो हमने एच की 120 यहाँ से रिटर्न होके कहाँ पे आ गई,
j के पास आ गई, and here we write a statement to print the value of j. Clear? Means two types are there. One is the return, second is the void. So actual parameter, formal parameter, and return मीन्स टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के, रिटर्न की कितनी टाइप्स होती हैं, वो सारा हमने ये आज किया है. अब फर्स्टली एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, रन द फाइल, look at this 120. Here is the answer 120. Now again change it with void data type. Void data type. Void data type. Run the file. Look at this 120 means this program is with the void data type, and first one is with the return data type. Why do we use the void data type? Our function does not return any value towards the caller, and when we use the return type, at that time our function returns the calculated result towards the caller. Clear? Now I think formal parameter, actual parameter, second thing return types, all are clear to you. So next we discuss call by value and call by reference. Thank you, beta.